Hello guys, today I'm going to start a very interesting and important chapter in physical chemistry, that is chemical kinetics. Now whenever we hear a word kinetics, normally we try to imagine things in a moving state, and when we really see things in a moving state, subconsciously you try to evaluate its speed. For example, a moving car, can we calculate the speed of that car? Yes, it is possible. If you know the distance, if you know the time of traveling, you can calculate the speed by using distance times speed formula. But what if you cannot see a moving thing? आप नहीं देख सकते हो कोई चीज़ मूव हो रही है, बट काम हो रहा है, a work is going on. For example, a car is moving from one place to the another place, so work is done. And there you can calculate speed if you know the distance traveled by the car in a given time. But what if the work is done but you cannot see anything in a moving state? वहाँ पर आप speed कैसा find करेंगे? So there the speed is evaluated with respect to work done per unit time. For example, अगर मैं classroom में जाके few students are there और मैं उनको बोलूँगा कि you have to write certain pages from your textbook, certain points from your textbook, you have to note down. They all start writing it. After 3 minutes, I asked them to stop. अब किसी ने 3 मिनट में 5 पेज लिख लिए हैं. Some have written only 1 page. किसी ने 2 पेज लिखा है, किसी ने 10 pages लिख लिए हैं. So the student who have written the maximum pages in the given time will be having more speed. So यहाँ पर मैंने speed को evaluate किया with respect to the work done, that is number of pages written in per unit time. So where you cannot evaluate speed with respect to distance time formula, you try to calculate speed with respect to the rate, and rate is nothing but work done upon time. So if I say chemical kinetics, kinetics means you are finding out the speed of the chemical reaction, but that speed is being evaluated in terms of rate, and rate is nothing but work done upon time. And if this rate is studied with respect to a chemical reactions where there are reactant and product, then that chapter will be called as chemical kinetics. Very simple to understand. And the speed of the chemical reaction is also governed by temperature, also controlled by catalyst, controlled by the concentration of the reactants. So in this chapter we're going to study a rate as well as the factors which affects the speed of a chemical reaction. The factor can be catalyst, it can be a temperature, there can be a reactant adding to the system or removing from the system. So if I want to define chemical kinetics, I will say that chemical kinetics is branch of that physical chemistry which deals with the study of the speed of the chemical reaction, or more precisely with the study of rate of a chemical reaction and the factor affecting the rate. So keep this in your mind definition कि हम लोग यहाँ पर rate study कर रहे हैं, and the factors we are going to study which affects the rate of the reactions like temperature, like catalyst, उसका effect क्या होता है. So अब physical chemistry में अगर मुझे एक reaction के बारे में study करना है तो first I need to prepare the reactants in a certain amount. तो उसके लिए आपको solution and colligative study करना पड़ता है. Then on a given set of a condition whether the reaction will take place or not, क्या reaction होगा नहीं होगा एक certain condition में, तो आप thermodynamics को approach करते हो. But for electrochemical reactions where you are producing electricity with the help of a chemical reaction, or with the help of electricity you are carrying out the chemical reaction, you need to study about electrochemistry. But if you want to study straight away the speed, the rate of the chemical reaction and the factor affecting the speed, you will study about chemical kinetics. So basically chemical kinetics is a branch of that physical chemistry which deals with the study of speed of the chemical reaction, that is the rate of the chemical reaction, and that is evaluated in terms of work upon time, plus you also evaluate the work done with respect to time, that is rate, and also the factor affecting the rate. Now before moving on to the technical terms of this chemical kinetics, we first try to build up our basic ताकि हमारा chapter और ज़्यादा strong हो जाए. So first we try to understand कि in which case we are going to study the rate of the reaction. अब reaction में मैं यहाँ पर 3 reaction लिख रहा हूँ. Okay. So first let us talk about the basics. पहला reaction देखो क्या है. AgNO3 in the aqueous solution, this is an ionic compound,
ठीक है. Now this AgNO3 is reacted with a NaCl, another ionic compound in aqueous solution. It results into the formation of AgCl का precipitate, मतलब PPT will be form a solid state plus you will get a NaNO3. Okay. Now in this reaction, it's a kind of a ionic reaction. You can say it's a kind of a double displacement reaction. So this is one of the reaction where the time tends to 0, मतलब 10⁻16 से 10⁻18 सेकेंड में रिएक्शन हो जाएगा. मतलब दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ वेरी फास्ट रिएक्शन. द टाइम टेंड्स टू 0 ऑलमोस्ट. एक दूसरा रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंड में रेस्टिंग ऑफ आयन, वेयर आयन get oxidized in presence of moisture, in presence of air, and you get a brown color rust, and that rust is basically hydrated ferric oxide. Okay, that is Fe2O3 x time H2O. This is the rust form. This is a kind of electrochemical reaction. ये आयन के सरफेस पे होगा जिससे ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म होगा. लेकिन अगर मैंने एक आयन की मटेरियल ला के रखा है तो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयंस, जहाँ पर आयन 0 से +3 हो जाएगा, ये कब कंप्लीट होगा. इट माइट टेक 1 month, इट माइट टेक 3 months, इट माइट टेक अ ईयर, इट माइट टेक 5 years डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, ओके द रस्टिंग विल बी फास्ट. बट इफ़ यू टेक दिस मेटल पीस अंडर अ ड्राई कंडीशन, लाइक अब राजस्थान में जाके रह रहे हैं, दिस वेरी ड्राई कंडीशन ओवर देयर, तो वहाँ पर रस्टिंग विल बी वेरी स्लो बिकॉज द मॉइस्चर इज लेस इन देयर. बट स्टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस आयन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. मतलब यर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी. बट अगर मैं ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ लैब के अंदर, वे ब्रिंग अ सुक्रोस दैट इज C12H22O11, सुक्रोस, sugar cane, a sugar cane. It has a formula C12H22O11. I add a water to it, do hydrolysis, I break this sugar in the presence of an acid. It results into the formation of C6H12O6 plus C6H12O6. One is glucose and one is fructose. Now ये रिएक्शन आप लोग लैब में कैरी आउट कर सकते हैं. द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज फाइनाइट. ओके, मतलब आपको पता है इस रिएक्शन के लिए, ये लैब में कैरी आउट आप कर सकते हो. दिस you can carry out in lab, but it is a very very fast spontaneous reaction. You just add NaCl solution of certain concentration into a certain concentration of AgNO3. The moment you mix them, you get a PPT, white PPT. मतलब the reaction is very fast. Ionic reactions जो हमारे body में भी होता है, the reflexes are controlled by ions, and our reflex is very fast. It is controlled by the sodium ions and potassium ions and pumping through in and out of the neuron fiber, which created a lot of reflexes, and that reflexes are very fast. So we can say, we can have this personal experience अपनी body को reflexes में डाल के कि yes, ionic reactions in a body are very fast. Rusting of iron is very slow process. Sucrose is a finite which can be carried out in a lab. This is a hydrolysis of sucrose. So अब एक reaction बहुत fast है, एक reaction it's very slow, and this is a moderate slow reaction. So सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन से reaction में we'll try to study the speed. So the speed of the reaction is governed by the factor that is rate, and rate is nothing but work done upon time, और time should be finite. तो इस कंडीशन में आप rate study नहीं कर सकते because your time tends to 0, anything upon 0 आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. Here it is a very very slow reaction where the time is finite. So अगर ये time finite is very slow reaction, तो यहाँ पर भी आप rate study नहीं कर सकते. So where you can study rate, you can study rate only in the reaction where the time is finite, that is moderate slow reaction. ना तो बहुत ज़्यादा fast होगा, ना तो बहुत ज़्यादा कम होगा. तो in such type of a reaction you can study the rate mechanism. Okay? तो फर्स्ट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्पीड और रेट कौन से रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं इन अ मॉडरेट स्लो रिएक्शन. ओके, नाउ depending upon the number of steps, there are two kinds of a reaction. One is called as elementary reaction, one step reaction, and second is a complex reaction, more than one step.
ओके। सो अगर हम लोग यहाँ रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकता है और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एलिमेंट्री मतलब वन स्टेप रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन वन स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल if I write down this reaction that nitrogen monoxide gas, that is called as nitric oxide, when it comes in combined with ozone behaving as a oxidizing agent, अपना ये ऑक्सीजन ONO को पास करेगा, it converts this NO into nitrogen dioxide and get a O2 gas. Now this reaction take place in one step, therefore it is a elementary reaction because it is a one step reaction. Okay. अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई राइट डाउन द सेकेंड एग्जाम्पल हियर. इन केस ऑफ अ सेकेंड एग्जाम्पल you have NO2 gas. Okay, now this NO2 is combining with carbon monoxide gas and result into the formation of CO2 gas, carbon dioxide plus NO gas, nitric oxide. Okay, see this reaction. This is not an elementary reaction. Why it is not an elementary reaction? Because अगर मैं इस reaction का mechanism study करूँ तो in step 1 this NO2 gas combines with one more molecule of NO2 gas, अपना एक ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा and it result into the formation of NO3 gas plus NO gas. Okay, now in step 2 this NO3 gas so form in the reaction will combine with CO gas, अपना OCO को पास करेगा ये and it result into the formation of NO2 gas plus CO2 gas. So अगर आप इसका नेट रिएक्शन निकालोगे, नेट रिएक्शन, तो दोनों साइड से NO3 और NO3 कैंसिल हो जाता है. इट गेट कैंसल आउट फ्रॉम बोथ द साइड एंड यू विल गेट दिस नेट रिएक्शन NO2. Even this NO2 get cancelled out. So you get 1 mole of NO2 combining with CO to get CO2 and NO. क्योंकि NO3 कैंसिल हो रहा है और NO2 कैंसिल हो रहा है. अब जो स्पीशी कैंसिल हो रहे हैं ना, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. So net reaction will be the same reaction when you cancel out both the terms. Now let us talk about कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है और इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में intermediate कौन है. Let us try to understand this. Now in this reaction if you see properly, NO3 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम भी हो गया. मतलब आप NO3 से मिलोगे ही नहीं, वो बीच में ही कहीं फॉर्म होगा और रिएक्शन के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, तो उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा. तो मतलब यहाँ पर NO3 का काम क्या है? NO3 का काम ये है कि अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर करो एंड कन्वर्ट बैक इनटू NO2. सो इट इज फॉर्मिंग इन द रिएक्शन एंड गेटिंग कंज्यूम विद इन द रिएक्शन. ना आपने इसको देखा, ना आप जानते हो इसके, ना इसको आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो. ये बीच में ही फॉर्म हो रहा है और बीच में ही कंज्यूम हो जा रहा है इसके अंदर. तो सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर फॉर्म विद इन द रिएक्शन एंड कंज्यूम विद द रिएक्शन, ना आपने इसको ऐड किया है, ना आपको ये प्रोडक्ट में मिल रहा है, ये रिएक्शन में बना और रिएक्शन में ही खत्म हो गया. सो दैट विल बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट. सो NO3 यहाँ पर इंटरमीडिएट हो गया, NO3 गैस. What about a catalyst? So catalyst का काम क्या होता है? If you have studied properly surface chemistry, it says that catalysts are those species which never get consumed but always participate in a reaction. मतलब वो reaction में participate तो करेगा but consume नहीं हो सकता. दूसरी बात, कभी कभार कोई reaction, some of the reactions are auto-catalyzed. मतलब one of the reactant in the reaction itself act as a catalyst and try to proceed the reaction. मतलब खुद ही catalyst का भी काम करेगा और खुद ही reactant का भी काम करेगा. So first point you need to remember that catalyst will participate, catalyst will never get consumed, आपको end में वापस मिल जाएगा. प्लस उसके बाद में कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो सेल्फ कैटलाइज होते हैं. अब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कैटलाइज रिएक्शन. सी प्रॉपरली, हियर इन दिस केस NO2 इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट. तो एक NO2 ने दूसरे NO2 को ऑक्सीजन दिया, ये NO2 NO3 में कन्वर्ट हुआ और वापस NO2 में बाहर आ गया. मतलब ये जो NO2 है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. यस. क्या ये रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है? नहीं, क्योंकि वापस भी मिल रहा है. तो दिस NO2 विल बाय डेफिनेशन एक्ट एज कैटलिस्ट. तो आपको हमेशा याद रखने का
Reaction intermediates is that species which is formed in the first step at the product side, form हो रहा है, consumed in the reactant side in the second step. Catalysts are those species which have been added to the first step और आपको लास्ट में वापस मिल जाएगा if it is an auto catalyzed reaction. So two things you need to remember, that chemical kinetics deals with the speed, that is the rate of the chemical reaction. You can study rate only in case of a moderate slow reaction, not in a fast reaction, not in a very slow reaction. Second thing, they can be elementary, they can be a complex reaction. In case of complex reaction, more than one step, there can be two species which can be easily identified. One is a catalyst which will never get consumed but always participate in the reaction, and second is the intermediate which is formed within the reaction and then can get consumed within the reaction. आप इसको ना extract कर पा रहे ना आप add कर पा रहे ना इसको product के side मिल रहा है. Okay, so ये पहला basic है. Next we will move on कि how we will find out, how we will evaluate the speed of the chemical reaction. Okay, that is the rate of the chemical reaction, जिस पे पूरा chapter based है. So हम लोग एक formula बनाएंगे जिसमें we'll try to calculate the speed of a particular chemical reaction.